So once you reach the National Data Archive, this point, you have to click on Other Surveys. In Other Surveys, you can search TUS, that means Time Use Survey, and click Enter. So it will search. And then there are two of them, 1998 survey and this 2019, December 2019, January 2019 survey. We'll be using this one. So 2019 one. And there is this technical documents and other material. There are 4 files here. Three are PDF, one is Excel. Download all the 4 files. So once it is done, go to Get Microdata. Click on Get Microdata. It will ask you for an email address and a password. If you don't have that, if you don't have the account, you can register from here, right? Sir, which one? Micro data? Where is it? If you at the top, Hmm. click on Microdata. Get micro data. Yeah, Get Microdata. It will take you to this page where it will be asking you email address and password. Okay. So you have to register actually. So it's a 1 minute process. Just do it. Okay. I already have account, so I'm just logging in using the same account. So I have logged in because, and now this microdata is available to me. If I click on tus.data, this part, this is a 50 MB file. If I click on it, it will start downloading. So it is downloading here. But I am Excuse me, sir. about these Yeah. applications for restricted access data. Like you Yeah. had a very smooth run, sir, when you were downloading it. I'm not giving this option. I have been given to an application for restricted access data. Oh, I mean, this will be same for all of us. If you follow the steps. So I have already registered for it, but still it's giving me this kind of application for when I'm getting clicking get micro data. Yeah, yeah. You I'm can just just write one line there, and it will give you then and there. okay. Yeah, just write some reason. Maybe I'm writing a research paper. I need it for personal use, for research purposes, for academic reasons. Whatever you write, and you'll get the access then and there. So I've downloaded all of this just So now. should I, in the case of type of data set, it should be other. Yeah. What? So I have been given three options, three rate Hmm. start marks. Estimated number of users who requested data, I put one. Type of data set, there are ASI, NSS, EC, IIP, PLFS, and other. 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 Okay. Sir, after registering, Hmm. we have to go to that other surveys only again, right? Yes, yes. Okay. And then you have to download which one? US. So Okay. then I have to click download. TUS data. I got that screen which you have Yeah, right now. this Then click one. Click download. here. Oh, achha. Click here. It will download. Again, 2019 to 2019, right? Yeah. Okay. But those four documents we already downloaded. Yeah, this is also required. All the five are required. No, this time use survey we've downloaded. There are four documents, right? Four are there, and this is one more, fifth one. Where is that? That I'm not able to see.
So in the documentation, there are four: Okay. data layout, estimation procedure, readme, and Ah, state district list. Four yes. are there. Ah, Plus get microdata. If you click there, you will find one more. This one, TUS data. okay, okay. Ah. So five are there in total. Five files. Actually, this is the data file, TUS data. The other are supporting documents. Okay. Okay, there is basically there is a lot of things to be given. Like, please provide a short description of your research project. All these things. Yeah, just you can write one liner there. So Okay. yeah, I need it for my personal, research paper. So I just wrote workshop on art. So they accepted it. Yeah, they will do it. They will accept whatever you write. They just need a reason. Sir, after registering, what where we to go? After registering, then again you can go for downloading the data. Get micro data. You can click there. Get micro data. Okay. So then this data will be available to you. Otherwise, you will not find anything here if you are not registered. If you have not logged in. So once everyone is done with the download part, then I will move forward. So I'll give you 2 more minutes. Please do it. Download all the four plus one, five files. In the meantime, I'm just getting those files from my downloads folder, and I'll be sharing and discussing with you. So do we need to keep all the files in one folder? Or Yeah, you can keep them in one folder and keep the folder at but some place. I mean, maybe desktop or somewhere like that. okay. So my last data file is an RAR extension file. Do I need to extract it also, or Yes, you have to extract it. and then keep it in the folder, or keep it in one folder and then extract it? What do you suggest, sir? Keep everything in one folder so that you can access all the files. Huh. Sir, this time use survey is like a WinRAR file. Na? There are five text documents. Yeah, it's a WinRAR file. Just extract it using a WinRAR. Okay. So the process to extract is there is option extract files. Just click that only. Okay, just give me 2 minutes. I'll come back. मम्मी त्यो सेतो छ नि लास्टको त्यो देऊ त नभए यो हाल दे All right. So I hope everything is downloaded. Sir, just one query regarding this extraction. When I'm trying to extract this RAR file,
I'm given option open, extract files, extract here, extract to time use survey. Which one should I do? Go for? Extract to folder, extract to time use survey. So it will extract everything into one folder. So, but when I'm clicking to extract to time use folder, it is written warning, no archives found. Okay. Okay, so do extract here, you can try. Extract here. Excuse me, sir. Same, sir. No archives found. Okay. What about others? Excuse me, sir. Yeah. So after logging in, what do we have to do? Could you please tell? After logging in, you have to go again to the page which you can see on your screen and then click get microdata. Okay. Sir, what we should fill in the data type, Data type, types of data set for other survey, registration? other survey, other. Other. Should I do the extraction again? I mean, should I download the file again, sir? Yeah, I mean, it should work. You should be able to extract it using WinRAR software. Are you using Windows? Windows, yeah, Windows. So there will be a software called WinRAR. So when you right click a file, which is uh, this file, the data file, it will show you extract here, extract to a folder. When you click on it, it will extract the files. Extract using WinRAR, so something like that might show. Sir, after registering in the get microdata, there Yeah, is in the get only one micro, file. there's Yes, only sir, one there is file. only, Yes, yes, sir. TUS TUS data data, and 50 I MB. need to download only this. Yes, yes. Apart from this one file, if you click on documentation here, you will find four more files. So download all these four also. So there will be five files that you will be having. Out of these four are already Excel and PDFs, so they will open by clicking them. But this Sir, one, get in microdata, this file is a archive, so you have to extract it. RAR, it is a .rar file, so you have to extract it, and then it will give you five files, data files, and they will be text files. So if you after got those, downloading this one, sir, how many of you got the text files? Sir, I sir, got four in text my case, files. Yeah, in exactly. my case, Sorry, it is five text downloading. files. Five text files, level 1, level 2, level 3, right? Yes, yes. Great. So that is what we wanted. I want all of you to get these files. Let me show you the files. Somebody is raising hand. Please speak. No, I was just telling that I got those files. Okay, okay, okay. Great. Not getting it. Can I share my screen to show what's showing in my screen when I'm trying to do that, extract that? I tried again downloading it. I'm getting this weird message of no archives found. Even I'm trying both all the alternative options. Yeah, please share.
So I'm getting this option. Okay, close it, close it, and show me your that folder, that file that you got, RAR file. This one. I downloaded it. So go It to is quick, in my download section. yeah, just right click it, right click, extract to time use survey. It is coming like this only. Okay, okay, no archives found. So it was not downloaded properly. So do it again. So again, thrice. I should delete this and then try again. Okay, why don't? Oh, okay, extract here. If you click extract here, what is happening? Extract here. Same thing, no archives found. No, there is another option. Extract here. So this one, Huh. वही आ रहा सर. Okay, so it was तीनों not में वही आ रहा downloaded. है. I think there was some problem with the download. Should I delete this again, try Yes, again? yes, yes. So this one you said, right? I Yes. downloaded it. And this is my download history. I'm going to. This one. Again, try that. Yes, yes. Download हो गया ना sir? हाँ And हो now, गया, हो गया. Yeah. which one should I try first? Extract here. ये वाला? Second Hmm. option. Hmm. Okay. Right click again. Let me see the other option. Uh, Try open with. This one? हाँ Winrar. Double click it. The archive is either in unknown format or damaged. So there is some issue here. I mean, with the downloads, you're not able to download to get the correct file. So try it in some other laptop. Other laptop. Yeah. So I don't have a spare laptop actually. So try it in your mobile and then transfer it to the laptop. That can be done, sir. Yeah, if your mobile is a big good mobile, it can be done. Maybe I think maybe on the WhatsApp. Right. So please unshare the screen. I mean, there's Yeah, yeah. nothing much that I can do in this. So what I got, let me show you. I have put everything in one folder. Excuse me, sir. Can you share me that data, the last data then in that case? Is it possible to mail it so that I can do it with Okay, you? okay. So I will let me upload it on my drive and share the link with you. Okay, sir. Let me try that. So I'll do that. In the meantime, see here that I've got these four files plus one. This is a .rar file. This is the data 52 MB file. So I'll simply uh, unarchive it, and it is working. So extract. So it is No, extract. somebody has shared it in on the group, sir. I'm just downloading there. Thank you. I don't know the name. AZGX. Okay, try that. Try that.
I'm downloading that, sir. So here in my system, it is right now it is extracting. नहीं हो रहा है. It's again giving the same response. So can you do that? Can you share it in your Google Drive and Yeah, allow me? I will do that. Let me extract the extracted file. I will share. Yeah, the extracted one only. I Hmm. think that will be used in the analysis, right? In the R software. Yeah, you'll be able to do that. So don't worry. I'll be sharing it. The rest four you got right. XLS, PDF, I got all those. only the data you want. No, It is still extracting, so it will take some time. Working a bit slow. In the meantime, I'm opening my. sir, are you doing that like extraction that you are asking me to do? Like Yes. oh, that is happening in your this thing, yeah, in your Yeah. Right now device. it's happening. So it's not showing on your screen, but on my screen there is this dialog box. Acha, acha, acha. So it's done now. Now you can see this extra folder here. See this. Oh, okay, fine. So the extracted files here are in this folder. So there are 5 files: TUS level 1, TUS level 2, level 3, level 4, level 5. So there are 5 levels here, and these are all TXT files, text files. So let me share the very first one. So I'll be using that. It is a 19 MB file. Let me try WhatsApp. I'll put it on the group so you can get the file directly from the WhatsApp. I think I cannot put an attachment in the chat, so I think I should have to use the WhatsApp. So you couldn't do in the Google Drive, I guess, because it's a big file. I guess it won't happen in chat. No, there will not be any problem in WhatsApp also. Just one file I'm doing, not the entire So the 52. problem is in the system or what? I didn't get that part. Why that was not working in my device? The other four were easily downloadable. Only this TXT means our RR file was not. Problem. It's a problem with the system, like I, Windows operating system. yeah, I don't know. I'm not sure what is the problem. So we can only guess. Thanks, someone let me try that. I think I had 7 zip. So I put that file in the WhatsApp. Those who are not able to extract, please download this file, us106 level1.txt, and from the group, WhatsApp group, and then you can start working on it. Right. So I'll be using the first one. Uh, Let me share the entire screen to discuss these few things. Uh, Better to share the entire screen. So these are the 5 files, and now I've just opened this file which I shared with you on the WhatsApp, and you can see it's sort of numbers all over the place, and there will be huge list of numbers. So difficult to scroll down. It will take a lot of time if you want to scroll down. So this is the data that we have actually.
Now the problem is that this data is, can you see it, the data? Yes, sir. Yes, sir. So the problem is that this data, there are no separators here. So in Excel, the numbers are tab delimited, so they are in cells. So three numbers are in this cell, then two numbers are in the next cell, then one number is in the next cell, and then we got nice looking rows and columns of data that we can use. Similarly, if you have a CSV file, then you will it is comma separated. So the comma is the delimiter, and we know where is this piece of number, a set of number is ending, and then the next number is starting from here, and it is ending here, two-digit number, and then the next number is starting from to the place. So, but this one is a text file, and we don't have delimiters, and uh, we can't make any sense of it. Although this is the data, the only thing that we will be doing in the process of extraction is that we will be separating these numbers in into cells like Excel. So we want them separated and put in the form of rows and columns. So rows are there, but we have to, separate the columns, right? So that's what we will do. This is the goal in the process of extraction. Our goal is to get nice columns and get the data separated, right, for each variable. So we don't know here that the first five uh, places is one variable, and the second variable starts from the sixth place up to the eighth place, and then the third variable is only one digit, so it is the ninth place, and then from 10th place to 15th place is one variable. We don't know that yet, right? Now for this we have to now these are the files that I have. We have to go to data layout. So if I click on this data layout.xls, this will tell us that what is there in the data. So if you see here for level 1, uh, there are these variables. Schedule ID is one variable. FSU serial number is another variable. Schedule is the third variable. Survey year is the fourth variable. And then sector, then NSS region, then district, and then stratum, substratum. So all these variables are there in that data. These are the column names actually in the data, right? Now we will focus on this. This is the most important column with respect to uh, you know extraction, because this tells us that schedule ID is length 3. So the first three elements in every row is schedule ID. And then the next 5 are FSU serial number. And then the next 3 are schedule. And the next 4 are survey year. Then next one is sector. So on and so forth. So we will be working on this length to separate the data into columns. Rows are there, but we have to demarcate uh, after three things. We have to put a separator, something that would separate the next 5, and then the next 3, and then the next 4, because these 4 is the survey year, right? So we'll be working on this column F, and then we'll be working on this column B, because here are the variable names. So we need only two things: the names of the columns and how many characters are there in each column. So two things is what we need. Are you able to see this? The Excel. Yes, sir. Yes. So I'll come back to it because we have to work on Excel a little bit. Right now I'm minimizing it. What about the other files?
So if you double click this estimation procedure, it is talking about how node on sample design. So it is talking about some description of when what was done, what type of sample was there, what was the design when this survey was done, and what means what. So it is a good idea for the researcher to read this properly, so you understand the nitty gritties of the sample design and estimation procedure, right? Then next is README. If I click on README, it is telling us that there are 5 levels and number of records in each level. So these are actually the number of rows. So 1,38,799 rows are there in level 1 that we are working on first. So we have to work on level 2, level 3, level 4, level 5 in the same way. So I will not be doing 2, 3, 4, 5. I'll be doing level 1, and then you can do the others yourself. So there are 1,38,799 call rows of data. And then uh, there's a description of the mm, description of the data, right? So for example, now these are the definitions. What is the meaning of participation rate in the survey? When the data was collected, what definition was chosen? Average time spent in a day per participant. So you have to read it to understand the definition of everything which is there in the survey that is asked as the question. And then the next is this Yes. Excuse me, state sir. district list. Yeah, In that file, readme file. So, yeah. is there any way out that we can get that txt file from clicking on that green highlighted area? I You can, had seen in somewhere in YouTube tutorials that that is one of the way that you we can, can. yeah, you Is can there? try that. You can try that if it works. It will be great if that works. Just double click on that highlighted green portion, right, for the txt files. Yeah, yeah. That might be a link, so it might take you to the download. Okay. So this one Okay. is district list. So in the data there are codes. It's not written LEH lay. It is written 03 in the data. So what do you understand by these codes? So that is described here: state code and district code. So which district is coded what? So for example, in Rajasthan, Bikaner is coded as 03, right? So this is about the codes, state and district codes. So survey was done in all these districts. So if you want to separate the data on the basis of particular state, particular district, the state code is 01. So there will be a column state code, and then there will be a column of district code. So when you have a state code of 1 and a district code of 6, that means the data is for Rajouri, right? So I think you can go through all this. So let me go back to the business area, which is the extraction part. So I'm opening the Excel again. So let me copy these 30 variables. I'm doing Control C, going to the next sheet, Control V, going to the next sheet, and I'm doing Control V. And then again, I'm going back and copying the length for the same 30 things. Control C, and then I'll paste it here. So I've got two things here now. One is the name of the variables that will be there. So this will be the column header.
there will be 30 columns, right? And then the length of each column. Length means the breadth actually. So how many characters will be taken? How many characters of the data will be taken for each variable, right? And this is sequential. I mean, this is serial in nature, that the first three will be schedule ID and the next five will be FSU serial number. So we can't just change the position. It has to be taken as it is. Now, if I'm writing in R code, then these should be put in quotes, because this is text. So they will be characters, and you have to put quotes around all of these. So this is one thing that we have to do. We can do it in R also, right? But it is easier and simpler if we do it in Excel before uh, getting into R. Again, for that, a very good way is if you just put open quote, comma, and this quote, comma, quote, and then copy it down up to 30. So we have this quote, comma, quote copied in column B, right? And then I can do equal to concatenate, and then I can just select both of them and press enter. Concat, and if I double click here, so you can see that this quote, comma, quote is just coming after every uh, you know uh, after every column name. I'm calling it variable, right? All of these are variables, so they will become our columns in the data. So could you please repeat this step again? I missed that part. Concatenate. So write equal concat and then select A1 and B1 and press enter. Little bit of Excel work we are doing. So once more, you said I have to give an equal to sign, then concat concatenate command, and then Open bracket and then select schedule ID and quote, comma, quote to both the things and press the enter. entire portion, sir. The entire this thing, schedule ID. Schedule ID, that is cell A1, and Huh. then quote, comma, quote is cell B1. Select both of them. So when I'm doing that, I'm getting an error. Okay, let me show you once again. So I'm doing it here, here. Can you see it where I'm doing it? Yeah. Yes, sir. So I'm On writing. concat command, I'm getting an error. So Could you please, sir, enlarge your screen a little bit? Zoom out a little bit. Right. Yeah. can you No, see it then I now? can't. Then now we can't. Acha, yeah, now we can see. Is it visible clearly? Yeah, visible. So write equal, write concat. Okay. So do you see this concat coming in Mm-hmm. green? Mm-hmm. Press tab. Tab. We need to press tab. Yeah. So you'll get this. So concat and concatenated is same, no? Same command. Concatenate. Are you getting concat or not? I didn't get any concat. I get concatenate. You Concatenate. can take that. You can take that also. Acha. Okay, fine.
when you when you got it, and then here select this the schedule ID and this quote comma quote together. See how I'm doing it? I'm just going in the middle of the cell and Hmm. then selecting both. Actually, we need to select both the inverted commas also. That Yeah. okay. And now press enter and it is done. Acha. Okay, just give us a minute, sir. So if you are getting concatenate, Hmm. maybe the formula is a bit different. So let me try that. Concatenate and Hmm. select both and enter. So are you So getting this thing? the, does it have to be in the same sequence? I did the inverted commas before schedule one. Will there be any problem? It's okay. It's okay. अच्छा हाँ देन उसके बाद B1 मेरा दूसरा सेल है B1 is to C1 मुझे मिला and then I have to put a comma or just enter. This concatenate is not working in my computer. अच्छा So, okay, let's select this, put a comma, select the next one, complete the parenthesis, click enter. Then it will be done. So when I'm doing that, I'm getting that value. It's that error is showing value. So do it like this. Are you doing concatenate or concat? What was that? Concatenate. So I'm showing once more for concatenate. Please see equal concatenate tab and then select only this one schedule ID. Then put a comma. Then select quote comma quote. Complete the parenthesis. Click enter. Okay. हाँ it came sir schedule ID and this. सर जो हम यहाँ पर फंक्शन कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं सर? चलिए अभी पता चलेगा आपको. वर्क विद मी. या ओके ये क्या सर सब रो के लिए करना है सब वेरिएबल के लिए. हाँ अभी आपको पता चलेगा कि हम किस लिए कर रहे थे. तो जस्ट डू इट विद मी. Just bear with me for some time. So all of you got this. Yes, sir. Yes, sir. Great. Now I'm going to go somewhere else in open space and write another formula equals uh, text join text join, or maybe I can use concatenate. Concat let me try. Yeah, it's working. So use the same again. So equals concatenate. I think for you, did you use the comma yourself? Yeah comma we used it yours So ourselves. then you have to put the comma many times if you have to do it like that. Concat. For me, I can do it directly selecting it, like this. So I will select all of them and then I will click enter and it is done. So, So what we need to do sir concatenate उसके बाद वो column select करना है. तो मेरा तो ये एक लाइन में आ गया, लेकिन आप हाँ अगर कॉमा लगाना पड़ेगा तो फिर आपको तो हर जगह फिर कॉमा लगाना पड़ेगा. सो दैट विल नहीं वो बी. तो ड्रैग करके फिर वो एक में आ जाएगा तो बाकी तो ड्रैग करके वही सेम आ जाएगा. करिए आप लोग का अगर ये आ रहा है तो. सर क्या करना है ये जो हम लोग ने बनाया है Again, कॉन्केटिनेट करके उसको चेक उसको क्लिक करना है राइट. उस right, कॉलम को क्लिक करना है right उसके बाद equal, right equal concat and select C1 to C30. कॉन्कैट नहीं आ रहा है सर हमारा कॉन्कैटिनेट आ रहा है तो क्या करना है. तो फिर ऐसा करिए, आप लिखिए टेक्स्ट ज्वाइन एंड देन इन द delimiter write nothing, two inverted commas with no space, and then write
false, and then So I'm not getting this option text join. I'm getting rather text only. what about others? Are you getting text join? So what was that concatenate from C? What do we do in H? Okay, so let me first do it like this. I will come back. So what I am doing is I am selecting all these up to 30 and clicking enter. So I am able to get this, all these. So I want it So like this. If so you, we have to bring it in one row, sir. yeah, एक ही row में लेना है. you have to bring it in one row, and then everything will be separate in quotes, and in the middle there will be a comma. Everything is in quotes, and there will, in the middle there will be a comma. So Okay. concatenate के बाद क्या comma डालना है अपने आप? And I'm sorry. What is? कॉन्कैटनेट वाले में कैसे होगा? लेट मी ट्राई दैट, बट टेक्स्ट Hmm. जॉइन से तो हो गया। अगर किसी का टेक्स्ट जॉइन से हो रहा है, प्लीज डू इट। सर मेरा text join भी नहीं आ रहा. मेरा concatenate दैट्स पे आ व्हाई रहा आई है एम सिर्फ. आस्किंग कि आप में से कुछ लोगों का टेक्स्ट जॉइन आ रहा है। Sir, I'm trying to put the comma 30 times. ओके, या दैट इज द ऑप्शन, बट दैट्स अ वेरी बैड ऑप्शन एक्चुअली। एनीवेज, let me show you the concatenate part also. Concatenate, अगर आप concatenate करते हैं तो you can't do like this, I think. तो ये तो फिर अच्छा, तो okay, let me try one more thing for you. uh, let me select all of these up to 30, Hmm. and then here I'm doing so I've copied, and now I'm writing, I'm doing Control Alt V, paste special, and values, oh, not values, transpose, Hmm. and then okay, so it will come. Okay, these are formulas, so it is not coming. So let me convert them to values. So Control Alt V, and then click on values, click on transpose, click on both, and then click Hmm. OK. So it will come in one row. अच्छा. Sir, could you please show it once more? So just Select करना है. नहीं, अभी आप रुकिए, पहले मैं देखूं कि ये concatenate से हो रहा है यहाँ। Equals concatenate. Now if I'm selecting the text, now it is happening. Hmm. नहीं हो रहा है। Concatenate से तो हो ही नहीं रहा है। Text join. Maybe you can try concatenate, selecting one cell at a time, then comma, then another cell, Yes, that comma. can be done. Yeah, that can be done. So then again क्या we have करना to है? do it.
You have to do it 30 times. No, Concatenate. tell me then. हाँ, Concatenate. concat. Sir, I did 30 times. Then हाँ, select I'll do 30 times. What is the process? write C1. So I'm telling you हाँ, the process. Write C1, हाँ, comma हाँ, C2, comma हाँ. C3, comma C4, comma C5, comma अच्छा, अच्छा. I have to press one by one. comma C7, and then click enter and it will be there. So this अच्छा, is all the one. 30 I have to press in one go, right, sir? एक बार करना, कॉमा 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 करके डालना, right? हाँ, कॉमा कॉमा करके आप डालते जाइए. C1, C2, C3, C4. अगर आपका C है, मेरा कॉलम C है ना, इसलिए मैंने C लिखा है. अगर आपका कॉलम D है तो आप D1, D2, D3 डालिए. हाँ, तो मेरा सर A1 है एक्चुअली. हाँ, तो आप A1, A2, A3 डालिए कॉमा के बाद, और वो सब आ जाएगा. फिर ये इसके ऊपर वाला कुछ करने की जरूरत नहीं है. दैट विल इट विल बी डन. उसके लास्ट में क्या मुझे ब्रैकेट क्लोज कर देना है सर? ब्रैकेट उसके बाद क्लोज एंटर कर, करना है. उसके बाद एंटर करें. ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि आपके सिस्टम में जो चीज़ें काम कर रही हैं ज़रूरी नहीं वो दूसरे के सिस्टम में कर रही हैं. तो वही तो प्रॉब्लम है सर, हम आप सीखते एक तो जगह है, जब खुद आप करने जो जाते कर हैं तो पा बहुत रहे प्रॉब्लम हैं होता है. और दूसरा जो ट्रेनी है वो वैसे नहीं कर पा रहा है. सो दैट देयर इज दिस इशू टेक्निकल. आई नो सर, वॉक्स. Because for me it is simple and easy. I'll do it very very quickly. I know my system, my laptop, how it works, what commands work well. To do it like this, and I don't have to do it because I've done it using text join already. तो मैं text join से कर रहा हूँ. आप लोग वैसे कर लीजिए. सर मेरे में तो ये कमांड आ रहा है, लास्ट में जब मैंने लास्ट 30 किया, A30 एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, मोर आर्गुमेंट्स हैव बीन स्पेसिफाइड फॉर दिस फंक्शन दैट आर अलाउड इन द करंट फाइल फॉर्मेट बोल रहे हैं. Concatenate. Concatenate में तो कुछ भी नहीं है, बस text1, text2, text3 बस यही करना है. हाँ, जो आपने दिखा सर, मैं एक बार शेयर करूँ अपना स्क्रीन, मेरा दिमाग खराब हो गया सर. एक मिनट, स्क्रीन शेयर करूँ क्या? करिए करिए. सर हेलो सर. या सर मैंने अपनी एक्सेल फाइल खोला, इसमें एडिट का वो एडिट नहीं हो रहा कुछ. तो आप उसे कॉपी पेस्ट कर लीजिए दूसरी फाइल में. ओके. सर ये आ रहा है, उफ बाबा, ऐसा ऑप्शन आ रहा है. A30 के बाद आप ब्रैकेट क्लोज करिए और एंटर हाँ करिए. ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट क्लोज है और एंटर एंटर. कर रही हूँ तो ये ऑप्शन आ रहा है, मोर आर्गुमेंट्स हैव बीन स्पेसिफाइड फॉर दिस फंक्शन ओके, तो दैट आर अलाउड. आप ऐसा करिए, इसको इसको आप 20 तक करिए. अच्छा, 20 पे क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट. कॉमा ब्रैकेट को करके एंटर. एंटर कर हाँ, दीजिए. आ अब आ गया. रहा है. अब आप हाँ बाकी के 10, एक और कमांड लिखिए. बाकी का 10 21 से 30 तक कर लीजिए सर, नेक्स्ट इस लाइन. रो में करूँ क्या या उसी इसी में करना है, इसमें नेक्स्ट में करना कर है? लीजिए. हाँ, नेक्स्ट में कर लीजिए. अच्छा, जब आप दोनों को कर लें उसके बाद ऊपर की दोनों जो नई बनाई है उन दोनों को कर लीजिएगा. फिर वो कॉन्कैटिनेट ही करना है फिर. हाँ, तीनों तीसरी बार में हो जाएगा. अच्छा, थैंक यू सर. अनशेयर कर दीजिए. ओके, तो आगे बढ़ें. एनीथिंग. अच्छा, 27 तक काम कर रहा है. भाविका हैज रिटन इट वर्क्स अप टू 27 सेल्स. तो आप 20 कर लीजिए, फिर 10 कर लीजिए, फिर उन दोनों को कंकैटिनेट कर दीजिए, हो जाएगा. सर सर आप जो थोड़ा 2 हमने मिनट रुकेंगे कंटेनेट किया हमारे ये. लिए? हाँ, मैं रुक हेलो रहा हूँ, मैं सर. रुक रहा हूँ. सर ये जो हमने कंटेनेट किया है ये किस लिए किया है? ये तो अभी आपको पता चलेगा. अब मैं एक्सप्लेन करूँगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं ये एक्सप्लेन अभी कर चुका हूँ, लेकिन मुझे लगा कोई फ़ायदा नहीं हुआ. जब हम आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे. सर जैसे हाँ मैंने सर, अपने दोनों हो लिए गए. अभी फिर दोनों को कैसे कॉन्कैटिनेट करना है? थर्ड लाइन में करना है क्या सर?
फिर तीसरी लाइन में दोबारा लिखिए इक्वल कंकैटिनेट और वो दोनों लाइंस को कंकैटिनेट कर दीजिए। अच्छा, ये वाले लाइन को आपने दो लाइन स्टार्टिंग बनाई से। ना, एक हाँ, बीच में ये लिखना है, कॉमा एंड ये प्लस बीच वन लिखना ये वाला। हम्म, हाँ, हो गया सर, थैंक यू सो मच। सर मैंने सर लेंथ वाली लाइन का किया है कंटेंट इन्हें, तो इसमें मेरा मतलब मल्टीप्लाई जैसे ना सर बहुत बड़ा नंबर आया है 534132 है। आपने क्यों किया है? सर। लेंथ वाला मत करिए, अभी रुकिए, वेट करिए थोड़ा सा। सर आपने ये मतलब जो किया था वो किस लिए किया था सर, ये मैं पूछना चाहता हूँ, जो रिजल्ट आया उसका क्या है? अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। मैंने इसलिए किया कि क्योंकि जब हम आर में लिखेंगे ना, तो वेरिएबल नेम हमें लिखना होगा। तो वेरिएबल नेम हम एक एक करके टाइपिंग करेंगे, शेड्यूल आईडी ये वो, तो मैं एक्सेल में 2 मिनट में हो जाता है। वो एक अलग बात है कि 1 घंटा लग गया हमें, लेकिन मैं 2 मिनट में कर देता हूँ, इसको आधे मिनट में कर देता हूँ, राइट। तो इसीलिए हम टाइप करेंगे वेरिएबल नेम को। इससे अच्छा ये है कि कॉपी पेस्ट तैयार करके रखिए, कॉमा लगा के, कुछ बस कॉपी पेस्ट करना होगा, आर में कुछ नहीं करना होगा, कॉपी पेस्ट करना होगा। ओके। सर, जो प्रॉब्लम मेरे सिस्टम में आ रही है, जैसे टेक्स्ट ड्रॉ नहीं आ रही है, कॉन्कैट नहीं आ रही है, क्या मेरे वो वर्जन के ऊपर है क्या, माइक्रो माइक्रो एक्सेल के? हो सकता है वर्जन, हो सकता है, कांट से एनीथिंग ऑन दैट। ये आप लोग का आ गया ये इस तरह से। लेट अस मूव फॉरवर्ड। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं मेरा? नहीं, मैंने शेयर नहीं किया। नहीं, आपको शेयर स्क्रीन नहीं। मुझे लग रहा है कि रिग्रेशन तो खैर हो ही नहीं पाएगा, ये अगर यही पूरा हो जाए तो काफ़ी है आज। ओके, नाउ आई हैव ओपन माय एक्सेल, दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। मैं ये हटा देता हूँ ऊपर का, ये कंफ्यूज करेगा नहीं तो। देखिए ये एक बड़ी सी लाइन आई है, लेकिन ये एक फॉर्मूला है, इट्स अ फॉर्मूला एक्चुअली। तो अगर आप इसको अगर आप कंट्रोल सी करें, सिर्फ इस सेल को, क्योंकि इसी सेल में सब कुछ है, तो कंट्रोल सी करें और नीचे वाली सेल में कंट्रोल वी की जगह कंट्रोल ऑल्ट वी करें और वैल्यूज पे क्लिक करें, वैल्यूज, पेस्ट एज वैल्यूज, एंड देन क्लिक ओके। तो अब ये वैल्यूज आ गई। अब हम जब इसे डबल क्लिक करेंगे तो वो सिर्फ, सर, वो नहीं आ रही है कुछ भी, आप जो बोल रहे हो। स्क्रीन आपका शायद फ्रीज हो गया है। वो सिर्फ वही दिखाई दे रहा है, हमें एक्सेल शीट ही दिखाई दे रहा है। ओके तो Sir, please share the entire screen. हाँ, एंटायर स्क्रीन शेयर। अब दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। तो मैंने क्या किया है कि ये मेरे पास था, लेकिन ये एक फॉर्मूला है, यू कैन सी दैट इट्स अ फॉर्मूला, राइट। टेक्स्ट ड्रॉ। तो हाँ, तो इसको इसको अगर आप कॉपी करके नीचे वाली सेल में पेस्ट करेंगे तो पेस्ट स्पेशल करना पड़ेगा। कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी एंड देन वैल्यूज एंड क्लिक ओके। वैल्यूज, so I'm pasting as values, not as formula, not pasting as values। ओके करेंगे तो ये, अब ये वैल्यूज हो गई, तो एवरीथिंग कुड यू कैन बी। प्लीज सर टाइप इट ऑफ देयर, क्या लिखा है आपने उसमें? कंट्रोल ऑल्ट वी, क्या बोला आपने? कंट्रोल कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी। कंट्रोल पहले करेंगे, ऑल्ट एंड पहले वी। करेंगे कंट्रोल सी, तो हम्म कॉपी हो जाएगा। उस हम्म पर क्लिक करके कंट्रोल सी करेंगे, फिर हम्म नेक्स्ट लाइन पे क्लिक करके कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे और फिर क्लिक, हम्म फिर वैल्यूज, पेस्ट एज वैल्यूज। कंट्रोल सी, फिर कंट्रोल सी वी,
उसके बाद क्या सर, वो तो वही कॉपी पेस्ट हो गया। एंड देन पेस्टेड एज वैल्यूज मतलब आप इस पे डबल क्लिक करिए, ऐसा आ रहा है। नहीं, वो तो वो फॉर्मूला दिखा रहा है कि कॉन्कैटिनेटिव F3 और F4 का। हाँ, तो वो आपको करना पड़ेगा, पेस्ट एज वैल्यूज करना होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला है ना, सो वी कांट यूज इट। तो वो ऑप्शन कहाँ मिलेगा सर, कंट्रोल ऑल्ट पेस्ट एज वैल्यूज? So that's what I am telling you. Control Alt V. If you press तो that, you वही get क्या सर, पहले इस ऊपर वाले ऑप्शन में जाके कंट्रोल सी किया, फिर नेक्स्ट फ्री लाइन में कंट्रोल ऑल्ट एंड वी किया, राइट? right. I'm doing it again. Let me show you once again. मैं दोबारा कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ। सबसे पहले you will click on this cell जिसमें वो सब है, डन उस पे डन, कंट्रोल सी प्रेस करना है। कंट्रोल सी, अब डन। उसके बाद किसी और सेल में जाना है, ये उसके बाद कंट्रोल ऑल्ट वी करना है। कंट्रोल Alt ऑल्ट वी, V। तो ये ओके। एक उसको क्या करना है, वैल्यूज? बॉक्स खुलेगा, वैल्यूज पे वाले को सेलेक्ट कर लीजिए, वैल्यूज, हाँ वैल्यूज, हाँ वैल्यूज हो गया। देन क्लिक ओके। So, but it's the same thing, no? There is nothing different. हाँ हाँ सर, आ गया अभी वो आप बोला ना, वेरिएबल वीएसटी सीरियल डिफरेंट नंबर शेड्यूल। डिफरेंट है। अगर आप पुराने वाले पे डबल क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा, और इस वाले पे डबल क्लिक करेंगे तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी। हाँ वैल्यूज आ रही है। तो इट इज डिफरेंट, राइट? आप मुझे बता देना आगे बढ़ने के लिए। सर मेरा तो हो गया, बाकी का देख लीजिए सर। So in one concat formula is coming, in the other the values are coming. That's the only thing, no? राइट। ठीक है। ठीक है सर। अब आप इसके शुरू में देखिए, ये जो सेपरेशन है वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले कोट लगाना है, कोट नहीं है शुरू में। तो पुट द कोड देयर, टाइप कर दीजिए कोड शुरू में, एक कोट लगा दीजिए शुरू में। लगा दिया सर। और एंड में एक एक्स्ट्रा कोट है और कॉमा दोनों हटा दीजिए एंड में। अब ठीक हो गया। दैट्स व्हाट वी वांटेड, वी गॉट इट डन। सर बैक साइड में क्या करना है आपने बताया, वो वहाँ पे बीच में आया? लास्ट में एक कॉमा, एक कोट एक्स्ट्रा होगा ना, वो हटा दीजिए। अच्छा अच्छा। अच्छा, मेरे में से कुछ इन्वर्टेड कॉमर्स मिसिंग है, वो क्या खुद ही मैनुअली करना है क्या सर? मिसिंग कैसे हो सकता है, फॉर्मूला लगाया तो। पता नहीं, अभी देख रही हूँ सर, जब उसको ओपन किया मैंने, वो डेट ऑफ डिस्पैच टाइम टू कैनवस मिनट्स नंबर, वहां से कुछ इन्वर्टेड कॉमर्स मिसिंग है। अगर मिसिंग है तो लगा दीजिए, आप मैनुअली लगा दीजिए। क्या? मैनुअली लगा दे रही हूँ। हाँ, लगा दीजिए। तो दिस इज डन। अब नेक्स्ट नंबर्स का करना है। नंबर्स में व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टाइप अ कॉमा, एक कॉमा टाइप कीजिए नेक्स्ट सेल में, और वही कॉमा नीचे तक पेस्ट कर दीजिए, 30 तक, राइट? और फिर से वही करना है, टेक्स्ट ज्वाइन। नहीं, पहले कंकैटिनेट करना पड़ेगा। इन दोनों को, थ्री के बाद कॉमा, और इसी फॉर्मूला को नीचे तक कर देंगे, तो हर एक नंबर के बाद कॉमा आ जाएगा कंकैटिनेट से। एंड देन वी विल डू द सेम थिंग, टेक्स्ट ज्वाइन, और इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे।
ये नंबर्स आ जाएंगे, कॉमा लगा के आ जाएंगे नंबर्स। इसको भी कंट्रोल सी करके नेक्स्ट वाले में कंट्रोल ऑल्ट वी करके पेस्ट एज वैल्यूज कर लीजिए। अब ये वैल्यूज बन गई हैं। तो दैट्स व्हाट वी वांट। एक तो ये चाहिए और एक ये चाहिए, दो चीजें चाहिए बस, दिस वन एंड दिस वन। तो पहले कॉमा, एक एक्स्ट्रा कॉलम में कॉमा लगानी है, उसके बाद दोनों को एक साथ लानी है, कॉन्कैटिनेट करनी है, ठीक तो हाँ, इक्वल्स टू। तो मेरा तो वो कॉमा ऑप्शन है, तो वो कॉमा ही करना है क्या सर, एक रो और वो वाला? डिपेंड्स ऑन आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अगर आप वही कॉन्कैटिनेट कर कॉन्कैटिनेट कर रही हूँ तो वो नंबर का कॉलम कॉमा करके फिर ये कॉमा का कॉलम कर लेती हूँ। कॉन्कैट और हाँ वो आ गया, थ्री और कॉमा एक साथ आना है ना। थ्री कर दीजिए, कॉमा लगा दीजिए, फिर नेक्स्ट कर लीजिए, फिर कॉमा लगा दीजिए, फिर F3 कॉमा F4 कॉमा F5 कॉमा F6 कॉमा हाँ F7। सर, दिस इज द सेकंड स्टेप। हाँ वो हो गया, उसके बाद क्या करना है सर, वो जो आपने हॉरिजॉन्टली किया? लेकिन इसमें तो कॉमा आ ही नहीं रहा है। नहीं मेरे में तो आ गया कॉन्कैटिनेट करने से। आ गया तो ठीक है। अब हम्म। कॉमा आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, आपका जैसे वर्जन आया नहीं, वो हॉरिजॉन्टल क्या करना, वर्टिकल वर्टिकल आ गया, हॉरिजॉन्टल के लिए क्या करना है? कौन सा ये आया है ना आपका? ये हो गया है, अब वर्टिकल का पूछ रही हूँ मैं, जो आप बोल रहे थे वैल्यूज कॉपी पेस्ट करके। नहीं, हाँ कॉन्कैटिनेट, उसके बाद आप इसको लीजिए, कॉमा H2 कॉमा H3 कॉमा H4 ऐसे करिए, एंटर करिए, आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके फाइन। वो पहले वाला प्रोसेस है सर जो किया था, एक सेम, एक को लेके फॉर्म करना, सेम। राइट। उसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल ऑल्ट वी, ताकि वैल्यूज अच्छा बन अच्छा, जाए, पेस्ट ठीक एज है वैल्यूज। सर। ये भी क्या 20 20 तक ही करना है रो, पहले वाला जैसे 20 तक किया था? हाँ, पेस्ट एज वैल्यूज। नहीं नहीं सर, वो 30 वैल्यूज एक साथ नहीं ले रहा था ना कॉन्कैटिनेट, पहली बार तो 20 करके किया हाँ ब्रेक 20, करके। हाँ 20 करके कर लीजिए, 20 और 10 कर So only 20 to be done because I think I did 30. No, 30 no, I can't do it, in one go. So I have to break it up to 20 and then I'm doing. If you're going with 30, then fine. That's good. I'm in a terrible वर्किंग situation इट right इज now. गुड। एंड इफ इट इज नॉट वर्किंग, आप 20 ले लीजिए, फिर 10 ले लीजिए, फिर दोनों को कंकैटिनेट कर। लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। तो आप पहले कंकैटिनेट, और ये है H1 H2 H3 H4 H5, ये 20 तक किया, एंटर किया, फिर दोबारा कंकैटिनेट, इस बार H21 H22 H23 H24, ये किया, एंटर किया, उसके बाद फिर से कंकैटिनेट, उसके बाद आपको ये वाली सेल कॉमा ये वाली सेल, एंटर, तो अब ये सब एक साथ आ जाएंगे। उसके बाद कंट्रोल सी, उसके बाद कंट्रोल ऑल्ट वी, पेस्ट एज वैल्यूज, और फिर ये वैल्यूज बन के आएगा। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ फॉर्मूला आएगा, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला नहीं आएगा, वैल्यूज आएंगे। So if it is done, we can move forward. सर इसमें भी वैल्यूज डाल ले क्या, कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट सी करके, वी करके वैल्यूज डाल ले उसमें ऑप्शन? Right, right, right. चलें आगे बढ़े। Yes, sir. Right. So we have got the two things. One is this schedule ID, FHQ serial numbers in quotes separated by commas, and then the numbers, everything separated by commas. Right. This we will be using in our R code. Now let's go to R, and when we will need it, we will copy and paste from here.
सबसे पहले set your working directory. वही folder you have to set as working directory, the folder that contains the data which we just downloaded, right? Set working directory, choose directory. Now I am going to that folder, which is actually desktop, and on the desktop I have this TUS data. So we are not able to see. Sir, Okay, can you please reshare your screen? okay, okay, Uh, okay, okay. सर जो फोल्डर में वो डॉक्यूमेंट सेव है उसको सिलेक्ट करना है ना, जहाँ पे सेव हुआ सेट द वर्किंग डायरेक्टरी होगी. Right. हेलो So सर. yeah, हेलो yes, yes. सर, आप ये अभी एक्सेल में जो आपने एडिट किया है, चेंजेस किया है, आप इसी को यूज करने जा रहे हैं आर में? हाँ, इसी को यूज करेंगे. सर, क्योंकि मैं ये कर नहीं पाया, तो आप ऐसा कीजिए, इसको, इस एक्सेल को सेव करके शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, सो दैट आई कैन आल्सो. ओके, ओके, मैं उसको कर देता हूँ. तो अभी go to session, set working directory, choose हाँ. directory, and choose that folder in which the data is there. हाँ. So on my desktop, this is TUS data. मैंने अभी 740 पे ये फोल्डर बनाया था. इसके अंदर ये एक्सट्रैक्टेड वाला जो फोल्डर है, जो एक्सट्रैक्ट करके आया था, जो मैंने डेटा आपको व्हाट्सएप पे शेयर किया है, वो जिस फोल्डर में है उसको आप ओपन कर दीजिए. So that will be your working directory. सेट द वर्किंग डायरेक्टरी यूजिंग पैराग्राफ डेस्कटॉप पेज. और मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ. ये जो बनाया है मैंने, Control-C, and I am putting it in chat. आप वहां से इसको कॉपी कर लीजिए. सिमिलरली नंबर्स वाला भी मैं कर रहा हूँ. दोनों को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है चैट में. मैं भी चैट से ही कॉपी करके यहाँ डालूंगा. और सेशन, सेट वर्किंग डायरेक्टरी, चूज डायरेक्टरी, एंड यू हैव टू गो टू दैट फोल्डर जिसमें डेटा है. जैसे कि इसमें मेरा देखिए डेटा TUS 106 लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 सब है, तो मैं लेवल 1 यूज करने जा रहा हूँ. So that is what I have set to working directory, right? And now we can start importing this file into R. so this we have to copy and paste where? So I will tell you when I will ask you, you can copy and paste at that time. Okay. So our goal is to read that data, जो 1,38,000 rows का जो data है, that text file we want to read it into R, right? So the code will be just to import the read the data, right? सर कमांड स्क्रिप्ट पैनल में होगी या कंसोल पैनल में, जहाँ सेट वर्किंग डायरेक्टरी सेट है? No, command can be, you can write it in this. चेक बॉक्स में लिख. सर. Yeah. Yeah. हेलो सर. Tell me. Sir, can you share your Excel file that, sir, can you share your Excel file so that it will be easy for me Yeah, I simultaneously? will do that. I will do that after the session. But for now, you don't need that. For now, you just need the numbers and the names. You can copy from the text box, chat box, Okay. and I will share the Excel file also with you. Okay.
So are you sharing your screen? Yeah, I'll be But we sharing the can't see. yeah, I'll be sharing the screen. Just wait a moment. Okay. Sir, while saving the Excel file, what should the extension, sir? CSV MS DOS is good, sir. क्या कह रहे हैं आप? सर जो एक्सेल फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ उसको उसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए सर? CSV और एक्सेल वर्कबुक एक्सेल फाइल को सेव कर रहे हैं आप? कौन से एक्सेल फाइल को सेव कर रहे हैं? सर जो आपने टेक्स्ट में लिखा है इसको आर में डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना है सर? कॉपी पेस्ट करेंगे उसको, कुछ नहीं करना है उसमें। ओके उसमें कुछ नहीं करना है। हाँ, डोंट डू एनीथिंग। उसको एक्सेल में नहीं करना आपको, राइट? सो यू कैन राइट विथ लेवल 1, कुछ भी लिख दीजिए, ABCD। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको। अच्छा, नहीं दिख रहा। लेट मी शो दैट। इट इज विजिबल नाउ। अभी विजिबल है। तो मैंने लिखा लेवल 1 डेटा। तो the function is read.fws। ये देखिए आपके में आ रहा है fws। Sir, would you please repeat the process? read.fws आ रही है। and then file equals write the name of the file। जो जो फाइल मैंने शेयर की है उसका जो नाम है एग्जैक्टली वही मैं लिख रहा था अभी। तो TUS, आई एम लुकिंग एट दैट फाइल ओनली 106 underscore L01.txt। This is the name of that file that we want to import, right? So it is TUS 106 underscore L level 01. L01 dot Dot txt. txt. Yeah. And then you can write next argument. You can, after the comma, you can switch the line and write width with the S equal to. And now you can go to the chat box and copy the numbers. अच्छा. So I am copying the numbers from there only. नंबर्स मतलब वो सर 3534 वो डालूं तो 3534 कॉपी कर लीजिए और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ये मैंने पेस्ट कर दिया और इसको C में करना है, C ब्रैकेट C बिकॉज इट्स अ वेक्टर। तो and then put a comma and then go to the next line and then write call dot names equal, again write a C and in the parenthesis copy paste all those schedule etc वो जो था उसको वहीं से कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो वहीं से मैं भी कॉपी कर रहा हूँ। ये जो है काफी लंबी लाइन हो जाएगी। इसका आपको करना ये पड़ेगा कि लाइन स्विच करनी पड़ेगी। तो कॉमा के बाद ही लाइन स्विच करिए, कॉमा के बाद।
कॉमा के बाद कहीं कहीं पे भी करें, लेकिन कॉमा के बाद करें। मैं लाइन स्विच करता जा रहा हूँ। ये आ गया। तो 2-3 बार करना है क्या? हाँ, जितनी बार भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, नहीं भी करें तो कोई बात नहीं। ये तो आपको दिखाने के लिए मैं लाइन स्विच कर रहा हूँ, अदरवाइज एक लाइन आपको दिखेगी नहीं ना, लंबी लाइन है। ओके, डन सर। एक और ब्रैकेट लगा दीजिए लास्ट में और कंट्रोल एंटर कर दीजिए। तो आपका डेटा रीड हो रहा है, देखिए ये रेड आ रहा है, स्टॉप बटन आ रहा है, दैट मींस इट इज रीडिंग। Because it's a very big data set, 138,000 rows, so it will take some time to read. Sir, I am getting some unexpected error. Okay, then maybe you missed a C, you missed a bracket, you missed a comma, something you missed. अभी भी देखिए रेड बटन आ रहा है, स्टॉप बटन, इट्स वर्किंग। सर ये सेम प्रोसीजर किसी भी यूनिट लेवल डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल है, जो प्रोसेस आपने बताया ना? बिल्कुल जस्ट चेक। आपका जो भी जिसमें भी आपको इस तरह का डेटा है, यू कैन डू इट। मतलब ये एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में होना पड़ेगा तभी ये वर्क करेगा, राइट सर? जैसे पीएलएफएस डेटा इसी फॉर्मेट में रहता है, हाँ, मैनेजर डेटा। पीएलएफएस तो सेम ही है, तो इट विल वर्क लाइक, बिकॉज बट वो भी एनएफएसएस डेटा भी होता है सर, आपने कभी देखो यूज किया एनएफएस? NSSO डेटा जो है, बिकॉज दे प्रोवाइड द एक्सेल फाइल्स, हम्म तो एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करना तो आप जानते ही आर में इंपोर्ट इट, हम्म so there is nothing like ओ extracting it, अच्छा अच्छा। because it is available in Excel format, it is available in stata.dta. हाँ, So when it is oh, if available, I have to use it in R, then I should download this thing import in it. Excel format. By importing it in from that format to into R will work. So the thing is that they are asking us, giving us permission. तो वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है कि इस फॉर्मेट में डाउनलोड करना है। आर अब अगर मुझे इस ऐसे फॉर्मेट में रखना है कि दोनों में यूज कर सकूँ, स्टेटा में भी और ये आर में भी, तो कौन से फॉर्मेट में रखने से अच्छा हो, डिलिमिटेड या एक्सेल एक्सेल फॉर्मेट में? Excel, text, CSV, ये तीनों बहुत इजीली इंपोर्ट होते हैं आर में। अच्छा अच्छा अच्छा। इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, नाउ इट इज डन। देखिए अब ये बंद, अभी अभी ये बटन गया है, तो let me show you what is there in the data. So I have saved it as level 1 data, ये this is the name given from my side, जैसे ABCD होता है। तो if I view it, uh, level 1 data, and then if I click control enter, you can see the data here. So it's there in the form of a data frame, and you can see that now you have nice looking columns with everything in place. तो जिस सर्वे ईयर इज 2019, उसमें भी यही नंबर्स थे, लेकिन उसके बीच में ना कॉमा था ना कुछ था, तो उसने उसको सेपरेट कर दिया है। बाय राइटिंग दिस कोड वी हैव सेपरेटेड द नंबर्स इन इन द वे वी वांटेड। सर कुछ डेटा एनए एनए आए हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना? एनए वाला जो डेटा है, तो वो अगर पूरा ही कॉलम एनए है तो दैट इज नो डेटा एक्चुअली, लेकिन अगर ओ कहीं अच्छा। पर बीच बीच में एनए आता है, सो दैट इज वी हैव स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू डील विद एनए, कि कैसे डील करना है, रिग्रेशन में करना है तो कैसे एनए का क्या करना है, कुछ और टेस्ट है तो क्या करना है, सो दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। So those are missing values actually. Sometimes when we are going when we are collecting the data, we don't get the entire data. We miss some values.
we don't get data on some value. So instead of removing the entire row, we just write NA there, and there is a statistical way to deal with that. So that's not a big issue. ये Okay. हमारा डेटा एक्सट्रैक्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया, and now you can work with level 1 data object because Sir, I'm getting some error. I'm not able to figure it this is the out. Can you data just? frame. दिस इज द डेटा फ्रेम. तो आपने डेटा फ्रेम पे जैसे जैसे काम किया है इससे पहले, वो सब कुछ आप इस पे कर सकते हैं यूजिंग इट्स नेम. द नेम इज लेवल 1 डेटा. या आप एबीसीडी रख देते तो एबीसीडी आ जाता, देन यू वुड हैव वर्कड विद. हाँ, अब आप बताइए आप क्या कह रहे हैं. यू गेटिंग अ एरर इन आर. Yes, yes. ओके, सो आई थिंक you have missed some comma, some bracket, something is missing. सर Shall I? कॉलम डॉट नेम्स के बाद कोई स्पेस नहीं देना ना सर. कॉल डॉट सर नेम्स के बाद जरूरी नहीं है, कोई स्पेस जरूरी नहीं है, इक्वल टू लिखिए और शुरू हो जाएगी. सर इसे जब दिया था तो सर उसमें नहीं वर्क कर रहा था, लेकिन अब प्रोसेस कर रहा है. हाँ, प्रोसेस कर रहा है, दैट मीन्स इट इज वर्किंग. सर आप रिग्रेशन दिखाएंगे क्या? एक्सप्रेशन हाँ देख लीजिए, आपके पास अभी है Sir, टाइम. if I share my screen, can you just help me here? या श्योर, प्लीज शेयर दिस. Okay. सर डेटा एक्सट्रैक्शन इतना तक ही था, राइट? वो एक्सेल में दैट्स इट, हमने जो किया. दैट्स इट. ओके, ग्रेट. ये देखिए, ये 2 मिनट का काम है. राइट सर, लेकिन वो कुछ टेक्निकल लेकिन हैंडीकैप हो जाता है ना कि ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है. आपने बोला ये 2 मिनट का काम है, लेकिन आधा घंटा इसमें लग गया. मैंने भी सोचा था कि 2 मिनट का काम है, लेकिन आधा घंटा आई लगेगा, वही लेकिन कंफर्म. इतने वर्कशॉप करके ना एक्सपीरियंस हो गया सर. लॉकडाउन में करीब वो इतने एक वर्कशॉप किए हैं, वो एक्सपीरियंस आपको मैंने बोला था सर. पूरा टाइम लग जाएगा एक्सट्रैक्शन में. ओके, सो आपका वर्क नहीं कर रहा है, एरर. अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ ढूंढने की कि कहाँ पे गलती है. लेट मी सी, अगर मुझे दिख जाए. Excuse me, sir. या Sir, I think there should be two brackets in the last. हाँ, एक ब्रैकेट और लगाइए यहाँ पे. एक ब्रैकेट लास्ट में एक और लगाइए. वेरी वेल पॉइंटेड आउट. अभी भी वही आ रहा है आपका तो. शुरू में भी शायद नहीं, EXT के बाद का ब्रैकेट शायद हट जाएगा. अरे ये आपने दो क्यों लगाए हैं कोट्स. एक कोट हटाइए यहाँ से, TUS के बाद. एंड .txt के बाद दो कोट लगाए हुआ आपने. द फर्स्ट लाइन, लाइन नंबर 5. हाँ, हाँ, रिमूव दिस, नाउ रन इट. उस कोड के बाद जो ब्रैकेट है वो भी हट जाएगा. हाँ, कोट के बाद ब्रैकेट नहीं होगा, ब्रैकेट हटाइए. नहीं, ब्रैकेट होगा वहाँ पे. ठीक है, ठीक है. read.fwf. नहीं सर हाँ, उधर ब्रैकेट नहीं होगा. ब्रैकेट हटाइए. ब्रैकेट तो नहीं था हमारे हाँ, वहाँ. ब्रैकेट फाइल. हटाइए. राइट, राइट. कोट के बाद टेक्स्ट TXT कोट ब्रैकेट है, वो ब्रैकेट हटा दीजिए. अब रन कीजिए. अब आप फिर से ये प्लस हटाइए यहाँ पे जाके. नीचे कंसोल में जाइए, वहाँ पे कर्सर लेके आइए लास्ट पे. हाँ,
एक बार रन कीजिए फिर से। कैपिटल नहीं, ये नहीं, पूरा पूरा। कैपिटल वी। कुछ भी आपने हाथ से तो नहीं लिखा है, कॉपी पेस्ट किया है ना सब कुछ? क्योंकि आपने जो हाथ से लिखा होगा वही गलती हुई होगी, कॉपी पेस्ट में तो गलती नहीं होगी। Okay, I am copy pasting my command in the chat. You copy it from there, the entire command, and run it. एक और ब्रैकेट होगा मेरे लिए शायद। नहीं, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप उसको कॉपी पेस्ट करिए। चैट में जाइए एंड आई एम पेस्टिंग इट देयर। इसको रन कीजिए। ये पूरा नहीं आया क्या? ये पूरा नहीं आया। लास्ट में एक और ब्रैकेट लगेगा, बस हो जाएगा। प्लीज हेल्प हिम अदर्स। अगर आपको कुछ दिख रहा है तो बता दीजिए। सर लास्ट में I एक और have shared ब्रैकेट लगा। also. हाँ, लास्ट में एक ब्रैकेट, Cyril, लास्ट में एक और ब्रैकेट लगाइए। MULT के बाद, फोर्थ एंड के बाद, विथ वन मोर ब्रैकेट। ठीक है सर। हाँ, अब रन कीजिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, जो ये सेशन डायरेक्टरी है उसमें फोल्डर आ रहा है पर फोल्डर एम्प्टी शो हो रहा है, जहाँ पर हम सेट करते हैं वर्किंग डायरेक्टरी को। हाँ। वहां से जो फोल्डर सिलेक्ट करना होता है वो ना एम्प्टी शो हो रहा है। अच्छा, मतलब सेशन पे क्लिक कर रहे हैं जब आप, तब? हाँ मतलब जब Cyril, सेशन। I have pasted the command in the WhatsApp, sorry, in the group chat. Just copy paste that and try once. सर आपकी कमांड इनकम्प्लीट आ रही है, एसयू में अटक जा रही है। हाँ, वो नहीं, पूरी नहीं आ पा रही है। साइरिल यू गॉट अवर पॉइंट। रिग्रेशन नहीं होगा लगता है सर आज। इनको ही भी रिग्रेशन करना था जो अटके हैं। अभी ठीक है, तो ऐसी बात है तो इसको रोकते हैं, एक दो रिग्रेशन करते हैं जल्दी से। हम्म, So let's do one or two regressions. उनको स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करना पड़ेगा सर। आ गया ना वो, देयर इज नो एरर।
Oh, you can see view. Do the view command. Excuse me, sir. Yeah. So I was asking ki after session tab, where we have to set the working directory. So you so you told so you told to select the to set the file that we extracted as the working directory. Huh. Not the But sir, file. The folder in which the file is there, that folder should be your working directory. yes, sir. But sir, when I'm clicking like to locate that folder, that folder is showing empty. अच्छा, ये कोई भी फोल्डर वर्किंग डायरेक्टरी का शो उसमें आपका वो फाइल नहीं होगा, फिर जो फोल्डर आप सेट कर रहे हैं कोई और फोल्डर होगा। Okay, sir. Let me try. हाँ, जिसमें आपने फाइल सेव किया है वो कोई और फोल्डर होगा और जो आप सेट कर रहे हैं वो कुछ और फोल्डर कर रहे हैं। मे बी डायरेक्टरी सेट करने वक्त वो एम्प्टी शो करता है, ऐसा भी हो सकता चलिए रिग्रेशन करते हैं। तो लेट मी शेयर माय आर। आई थिंक द टाइम इज नॉट देयर। So, So 5 minutes है आपके हाँ, पास. so now no error 5 minutes is में coming. zero regression Why होगा. is the output not coming? The red button was still working, Cyril. Okay, it has come. Finally, it has come. Yeah, it was the red button was still working out when you were clicking this view data. Okay. हाँ, ठीक है. Got it? Yeah, Yeah. got it. Thank you. Now let's get with the regression thing. He has got only 4 minutes, I guess. तो आई विल डू वन रिग्रेशन, वेरी सिंपल वन। आप उसके बारे में बताने का भी टाइम नहीं है, सो आई विल जस्ट राइट इट। एक लाइन ऑफ कोड कैसे लिखते हैं। फॉर दैट डेटा क्या लें, एक ऑलरेडी जो आर में डेटा है उसी उसी को ले लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज आई वुड हैव प्रोवाइडेड टू द डेटा, वरना फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा तो टाइम लगेगा। तो सर अभी जो डेटा इंपोर्ट किया उससे नहीं होगा ना सर रिग्रेशन? नहीं हो जाएगा, लेकिन वो डेटा उस तरह का नहीं है और फिर वो अच्छा. बड़ा डेटा, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू डू इट। तो लेट मी शो यू, आप उस पे कर लेना। लेट मी शो यू अ सिंपल वन। So there is a data set called Longley data, Longley. So let me try and use that. आप सबसे पहले करिए So long is economic regression data. Longley, new Longley करिए। You'll see that this is there are some variables here, GNP deflator, छोटा सा data set है। GNP, unemployed, armed forces, population, year, employed. So there are these 7 variables which are there in the Longley data. So what I can do is attach Longley। ये मैं अटैच इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वेरिएबल बाय वेरिएबल अवेलेबल हो जाएगा। कोई भी नाम दे दीजिए, मॉडल 0। देन द कमांड इज lm। lm मीन्स लीनियर मॉडल। एंड अच्छा, इससे पहले मैं कुछ नेम्स लिख लेता हूँ। नेम्स तो नीचे नाम आ जाएंगे तो लिखने में इजी होगा। तो आई एम डूइंग अ रिग्रेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन अदर वेरिएबल्स के बाकी वेरिएबल्स, हाउ डू दे डिटरमाइन एम्प्लॉयमेंट।
So I'm doing a model of employment. Employment depends on GNP, armed forces, population, all these things. Let us assume that. So for that, we have to write employed. This is the dependent variable. The dependent variable has to be written first, and then you have to write tilde, shift, using a shift. Tilde is there at the very just below escape key at the top left corner of your keyboard. So employed is the dependent variable, and we are hypothesizing that it depends on the other variables. For example, GNP, and then whatever variables you want, you can use a plus sign and add them. Unemployed, armed forces, here, and then in the end, use a comma and write data equals long list, right? And run it. So your model is run, the regression is run, where the dependent variable is employed, number of employed people, and the explanatory variables are GNP, unemployed, armed forces, year, and data set is the data frame long list, right? Then next line you write summary, model 0, and press Control Enter, you'll get the results. So these are the results. So how do we read the results? We will simply see the slope coefficients written in this column estimate. So this -4 means the if GNP rises by 1 unit, then employment falls by this much. If unemployment rises by 1 unit, then employment falls by this much. If number of people in the armed forces rises by 1 unit, employment falls by this much because there is a negative sign. The next are standard errors. So these are the standard errors. If we had time, we would have discussed the concepts of these things. Then these are the t values. So we want them to be significant. We have to see the p values. The p values are here in the last column. So the p value of the GNP is less than 5%. It is significant at 5% level. This one is significant at 0%. This one is significant at 0%. This is significant, I mean 1%. So all of these are significantly different from 0. They are highly statistically significant variables. So there is a relationship between these variables and the dependent variables. So that's how we do a regression. I thought I would be doing a 1 hour portion on regression and 1 hour on data extraction, but the entire 2 hour went into extraction. Anyways, we'll be stopping here, and I'll be doing workshop on. I try to do on regression, one workshop, and the entire 5 day workshop will be on regression, different types of regression, and econometric analysis of the data. I'm So will planning you be doing I'm planning quantile regression also? one workshop on data visualization, the complete workshop of 5 days on data visualization, because it is very interesting and important. So people know R because of its visualizing capabilities. So I'm planning to do that in future, and I'll let you know in this group when I do that. Quantile regression, or I'll be doing quantile regression, logit forward. I'll be doing simultaneous equation models. I'll be doing some time series data analysis. I'll be doing panel data. Uh, I'll be doing how to deal with dummy variables in regression, how to, and I'll be talking about the interpretation and the writing part, the theory part, the econometric theory of all these. So that will be detailed, and I plan to do it in future. I'll let you know
I'll share the poster on the WhatsApp group that we already have. So for now, I'm stopping. And one more thing, I'll be sharing with you one Google form for feedback. So my request is that please give your honest feedback so that we can we know I come to know about whatever the limitations were and what improvements are required and what was good in the workshop also. So please do write. Take some time to give the feedback. It has been a wonderful 5 days where we learned R together. I hope I made myself clear on the topics that I discussed. And thank you so much for joining the workshop. And your certificates I'll be sharing with you and will be in 1 week time. So please be there on the WhatsApp group. Don't leave the group until the certificates are given. These were the three announcements from my side. Uh, so that's it from my side. Thank you so much. Uh, Thank you for being such a nice, attendees or trainees for me. Thank you. I must say you have been really sweet and very patient with us. The time which was required for 2 minutes it took a longer half an hour, but you were very patient with us. I've attended so many online workshops. I must say I will rate you one of the topmost, sir, with so much of patience and taking all the stupidest errors. Also, you are handling it very. Other business persons go, "Arey, ये तो हो जाएगा," and all that, but you didn't do that. So I am really happy. So whenever you are announcing any these workshops, I'll surely attend one thing. So but only one request I want to say that now अभी हमारा पूजा का छुट्टी है because we are from Bengal तो दुर्गा पूजा चल रहा है तो we could attend very easily. One of our participants is also still there with me from my university. तो जब नेक्स्ट जब अनाउंस करोगे तो शायद तब हमारा कोर्स वर्क चल रहा होगा तो थोड़ा टाइमिंग थोड़ा नोट कर लीजिएगा या वीकेंड्स में ऐसे अरेंज हो सके तो इट वुड बी रियली ग्रेट So सर do you prefer weekends only? I mean, 2 days, one weekend, another weekend. नहीं नहीं सर दिस 5 days was great ना 5 days is great बट टाइमिंग का थोड़ा वो अगर आप थोड़ा 7:30 को स्टार्ट कर सके या 8 को so but other participants also you have to look out for so just a request from my end actually sir. Okay, I'll And see it. thank you so much sir, Thanks a lot. thank you so much. So, I wanted to know whether you were planning to do something on data handling and data extraction, especially. Data Data handling. handling. Yes, yes. Okay. Uh, Data handling, like deploy our thing we did. No, not particularly on R. Like just today, what we showed that how we extract data from text to other. Yes And sir, yes sir. Wave I have scrapping found the problem that people say go to this site and take the data, but it's not that easy as it was said. So maybe you can help us technically in some workshop. Okay. and so you use only R or you use on other software like Stata also? I used to use other software before, but for the last 5, 6 years, I've been using R only because I could do everything in R, whatever I wanted. Statistical part, of course, I'm not Hmm. using R for any other thing except econometric analysis, statistical analysis. So I prefer R for those things. So if you don't mind can I ask you what was your PhD topic and research area if you don't My mind? yeah, sure, sure. No, that's completely okay. So I did my PhD from Aligarh Muslim University in 2014. I Hmm. completed in 2014 and from Department of Economics. So it was in economics, and my topic was gender disparities in human development in India and interest rate comparison. So Okay, that was okay. my topic, but I didn't work on that topic later. I started working on other things like agriculture sector, development economics, and the like. So that was a So one-time did you course. use R that time?
No, no, in no. your work? I didn't use R at that time. Acha, acha, acha. Uh, that Oh, time 14 you said, and you're saying R you used from 5 6 years back. five Okay. six years, yeah, but that is 10 years Mm. back. That's what I'm doing the So calculation. 10 years back I completed. So Uh, 2008 was my registration. From 2008 to 2014, that were the uh, 6 years when I was doing my PhD. so gender, I'm also thinking of a chapter in my. I might seek your help Yeah, with yeah, the sure, embedded sure, children. sure. Let me know if I have time, if there is anything that can be done from my side easily, I will. So again, thank you so much. Thanks for joining. See you again in the upcoming workshops. Thanks a lot. Good night. Thank Thank you you, so much, sir. sir. Good Thank you night, so sir. much. Thank Thank you. you, sir. It's a really good workshop on R, and it is first time I attending this kind of workshop, and in 5 days it's really helped me because I am working on SPSS, and also I tried to uh, upload that data in R. Somehow I succeeded, but in future if any workshop on R in advanced level, I will attend that workshop. So, though I don't have economic background, I am from political science, but I always prefer to work with quantitative data. So for quantitative explaining quantitative data, it's a very very good technique or technology which defined easily all these things. So yes, I am comfortable with SPSS, but hopefully I will I will uh, more comfortable with R. So yes, because never know about how to handle data on R. So this is a basic, and it's really helped me to understand how data will explain in this technology. So and like Susma said that you really listen very carefully every comma, even a space. Yes. Yes, sir. That's It really is truly double great of space, single space, comma, bracket, curly bracket. So you. Right. no one can uh, most of the time people are not because you are also sharing this data, oh sorry, video and other syntax. So simply you can also say that yes, you can go and again listen that video and you can do your own but you never said that. So you shared video, but also you listen carefully, all of us. So thank you for that, and it's a very appreciable job you have done. So thank you so much, sir. Thanks a lot. Thanks a lot. Keep practicing. I'm sure you will get better and better if you use R more and more. Thanks a lot. And Sir, one don't delete the request from WhatsApp my groups, side. sir. Keep it there, even after Uh, distributing the certificates. sir, I have one request. Yeah, Uh, Whenever we'll practice on R. If any problem we will face, so can you help me in future? yeah. I Not will try. I will try to do that. everything, but some little Definitely, things. definitely. I will try to do that. You can just share it with me on my WhatsApp, Mhm, and mhm. whenever I get time, I will try to help. So that is completely fine with me because I also work in with R a lot. So I have an interest in it. So it is great. I'll do that. Okay, okay. Thank you so much, sir. Again, lots of thanks and good night. Thank you. Thank you. Good night. Excuse me, sir. Yeah. Well, sir, thank you so much, first of all, for the amazing workshop for the 5 days. And like, I used such kind of software for the first time. I really enjoyed it for the 5 days, and it was very knowledgeable for me and very informative for me to say the very least. But and I would like to say that
that thing that was earlier mentioned to see the timings around 8 o'clock or something like that. So I also had the same request key whenever you are scheduling another workshop in the future to consider that timing, 8 to 10. like somewhere around 8. Okay, I'll Thank you see so to much. it. Thank you so And much. sir, do you travel? If we invite you in Kolkata, will you travel all the way from Delhi to Kolkata to give us 5 days workshop for 10 days? So Yeah, we are yeah, thinking of doing a data fest. So we'll invite you. I'm more than willing to do that. The only thing is time. So if Huh. I get time and if it matches your time, and then it can be done. That's completely okay. Okay, sir. So we will do something. We are thinking of something. So have you been to Kolkata? No, Okay. no. Thank you so much, sir. Good night. Take care. And keep us updated in the WhatsApp group, sir. Yeah, I'll update the WhatsApp group Okay, for sir. everything. Yeah. Thank you. So thank you. Good night. Uh, we will. I will do the certificate thing and other things. I'll update on the WhatsApp. Thank you so Thank you, much. sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.